Okay, so let me share the screen first. Okay, so I hope Zika, this tagging area, this concept is clear to you, right? So moving to the next. Yes, sir. So in staging, we simply remove the noises, right? Means Yes, we pre-processes. Actually, what happened in the single tier data warehouse architecture, or you can say basic data warehouse architecture, there is no such place where you will pre-process the data. You will directly push the data into the data warehouse. Now, in the staging area, what we are doing actually, we try to remove the noises or we try to irrelevant data. We keep only the relevant one in the data warehouse. Okay, so that particular place is known as staging area, and this is a two-tier data warehouse architecture. Right, you, from this diagram, it's very clear that you'll see that different data sources are there, right? And then we pre-process it, then we'll keep it in the data warehouse, which will be accessed by different users, right? So that things one to one. This again one more diagram for that. Now there is a very important term with respect to this second tier architecture, that is ETL. Although last class I have talked about this, I have given some examples of this. Let's discuss it once again. So ETL is a process in data warehousing, and it stands for what? Extract, transform, and load. Okay. So it is a process in which an ETL tool extracts the data from various data source systems and transforms it in the staging area, and then finally loads it into the data warehouse सिस्टम। सो तीनटा ऑपरेशन, थ्री ऑपरेशन है यहाँ पे। क्या क्या है? आपका एक्सट्रैक्ट करना है, उसको रेलिवेंट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है, एंड आफ्टर दैट you are loading it into the data warehouse. That is ETL. Now we come to the final one, because this was the second tier. First tier we have already discussed. Third one is data warehouse architecture with staging area and data merge. So one more concept being added here, that is data mart. Okay? So we may want to customize our warehouse architecture for multiple groups within our organization. Means कोई भी कंपनी मान लो, तो वहाँ क्या होता है, आपका अलग अलग डिवीजन होता है, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल सेलिंग है, मार्केटिंग का एक है अपना डिपार्टमेंट, एचआर का है, ऐसे different I can say groups exist in one organization, and we want to customize our data warehouse data with respect to those different multiple groups. ठीक है sir? So what happened then? For that, we will take the help of data mart. याद तुम्हारे देखिएगा, यहाँ आप लोगों ने क्या देखा था कि ये डेटा सोर्सेज है, टेकिंग एरिया है, और वेयर हाउस से डायरेक्ट आपका यूजर्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। किंतु এটা আমি কি করি, अभी हम यहाँ और एक्सेस कस्टमाइज कर देंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंगली इस डाटा को रखेंगे, ताकि ये जो एक्सेस हो यहाँ से, ये जो हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, तो ज़्यादा आसानी से आपको एक्सेस हो जाएगा और आपको डेटा रिट्रीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So you can do the analysis process more efficiently. So for that, we are using the concept of data mart. That clear? So let's define it once again. What is data mart? Data mart माने की. Okay. Data mart is a segment of a data warehouse that can be provided information for reporting and analysis on a section, unit, department or operation in the company. যেনেকে मैं কৈছিলো যে सेल्स हो गया, आपका पेरोल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो ये अलग अलग डिविजन्स के अकॉर्डिंगली हमने पूरे डेटा वेयरहाउस डेटा को सेगमेंट कर दिया है, राइट? नाउ लुक एट दिस फिगर. My voice is coming clearly now, Jika?
Yes, sir. Okay, so overall, this process is clear to you. Tumaluke already we have gone through the two tier and one tier. So up to this portion is clear. Now, what extra thing you will see here is this data mart. Do note that this question might be asked in the competitive exam also. What is data mart? Right, and in which type of data warehouse architecture is data mart present? So from the data warehouse, you will see this star, means different divisions or different segments are there where we are organizing our data. So this figure illustrates an example where purchasing, sales, and stocks are separated. Here a financial analysis wants to analyze the historical data for purchases and sales or mine historical information to make prediction about the customer behavior. So overall, when you organize the data in this way, what we'll get in return is that an efficient or accurate data analysis, or what I can say, business analysis, right? So data mart is a structure or access pattern specific to data warehouse environments used to retrieve client-facing data. This is a subset of a data warehouse and is usually oriented to a specific business line or team. क्या ये दो definition clear है? Are these two definitions are clear to you? Why I'm calling it as a subset of data warehouse and why we need this data mart? These 2 points, are they clear to you or not? Sir, subset के लिए कौन है ये? Right, subset your call. Subset etu karne ko, you will see that in this data warehouse, lot of historical data presence, right? But we segment it, we divide this into different groups. जैसे कि एक कंपनी में क्या होता है आपका, मैंने जो एग्जांपल दिया था, आईटी सेल है, राइट, सेल्स डिवीजन है, एचआर है, बट वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जब हम उसको एकजुट कर देंगे तो क्या होगा, ओवरऑल उस कंपनीज के एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉयज मिल जाएंगे या नहीं, राइट? যেতিয়া আমি গোটেই Yes. ডিভিজনৰ একলগ কৰি দিম, যিমানখিনি এমপ্লয়ী আছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই কি হ'ব, সেই কোম্পানীটো overall employees structure পাই যাম. But if you consider them individually, মানে মই যদি consider কৰোঁ sales, so salesত যিমানখিনি এমপ্লয়ী আছে সেইখিনি obviously গোটেই কোম্পানী যে এমপ্লয়ীখিনিতকৈ কম হ'ব, right or wrong? Yes or no? Yes, sir. So that's the basic concept. In mathematics, subset is what? The elements, they cannot be greater in number than the original set. মানে যিটো আমাৰ অৰিজিনেল ছেট তাতকৈ আমি অবভিয়াছলি কম সংখ্যক, বা যদি সেইটো এটা প্ৰপাৰ ছাবছেট নহয়, নৰ্মেল ছাবছেট হয়, তেনেহ'লে সমান সংখ্যক एलिमेंट्स रखेंगे. दैट्स द डेफिनेशन. उसमें बराबर या उससे कम एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट है. ये डेटा मार्ट में आपका जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसमें आपका जो एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली क्या होगा, इससे कम होगा. So that's why I'm calling it as the subset of data warehouse. Now, you tell me, Joika, is this clear to you or not? Yes, sir. So that means in data warehouse, গোটেইখিনি বস্তু মানে তাত গোটেইখিনি একলগকে থাকিব আৰু তাৰে সাবসেট মানে সাপোজ আইটি ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে যেনিবা ফিনেন্সৰ কাৰণে ভাগ ভাগকে এটা এটা ডেটা মাৰ্টত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব ওভাৰঅল, তেতিয়া সেই ডেটা ওৱেৰহাউছৰ এটা আমি সাবসেট বুলি তেনেকে ক'ব পাৰিম. Very good. সেইটো Exactly. কৈছে আপুনি. Right. ওভাৰঅল কিন্তু কৰবাত অৰ্গেনাইজ হৈ গোটেইগাল কৰবাত থাকিব লাগিব, মানে সেইটো বস্তু ডেটা ওৱেৰহাউছত থাকিব. Right, right. So, আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ, উম, what উম. I was talking about that we have collected the data from different sources, right? So the ETL process, extract, transform, and loading process, we have transformed them into, we have placed them or landed them in the staging area where we have pre-processed them, right? And after pre-processing it, when while we have removed those relevant data, we have kept them, we have pushed them into the data warehouse. মানে গোটেইখিনি যে ডাটা আছে সেইখিনি অলৰেডি data warehouse আছে, but
আমি এটো কি কৰিছো, this is the three tier architecture. We try to refine the second tier so that we can efficiently analyze those historical data. আমি ভালকে accurately বা efficiently সেই ডাটাখিনি কি কৰিব পাৰো। আমাৰ main aim to কি, what is our aim in organizing this data is to find out the pattern that is not easily available in the data. We have to do some analysis procedure, or also we may apply some data mining techniques on them so that we can find out some hidden pattern. সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে, सपोज मैं एक एग्जांपल दीजू, ये कोविड एरिया में क्या हुआ था, सपोज गुवाहाटी हो गया, जोरहाट हो गया, तो कुछ कुछ एरिया से ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसमें बहुत अफेक्ट हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी means that it works, that is not properly, means বন্ধ আছিলে আৰু বহুত কিবা কিবি হৈছিলে, so that could not be performed properly, so that's why this online shopping affected in those areas. So সেই বস্তুটো আমি কেনেকে চালে গম পাম? When we looked into the data of the previous 6 months, right? যেতিয়া আমি সেই ছমাহৰ ডাটা চাম তেতিয়া সেই বস্তুটো এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম। And also from that what we can analyze, or what we can conclude, that in future if this type of pandemic conditions occur, and in which areas the online shopping or online marketing is going to be affected, and what are the reasons behind that. এইটো এটা এনালাইচিছ কৰিলো নে নাই? এটা এনালাইচিছ কৰিলো আমি। সাপোজ মোৰ এটা কোম্পানী আছে, মোৰ এজন সাপোজ বন্ধুৰ কোম্পানী এটা আছে, অৰ্গেনিক মাজুলী, সাপোজ that is the company, but that is being suffering from because of this issue. So next year আমি সেইখিনি আগতে কি কৰি লম, ট্যাকল কৰিম, so that we are not going to face the same problem again. So সেই প্ৰচিডিঅ'খিনি কৰিবলৈ আমাক কি কৰিবলগীয়া হয়, এই যে আৰ্কিটেক্সাৰটো তাত অৰ্গেনাইজ কৰিবলগীয়া হয়। তোমালোকে যেনেকে মই কোৱাৰ মতে এটা আমাৰ কি কৰিলা, গুৱাহাটী ডিভিজনৰ কাৰণে বেলেগকে সজাই দিলা। সাপোজ তোমাৰ কোম্পানীতে বহুত বহুত ডিভিজন আছে, সেই ডিভিজন ৱাইজ তোমালোকে অৰ্গেনাইজ কৰিলা। চ' তুমি গোটেইখিনি ডাটা সেই প্ৰচিডিঅ'টো কৰাতকে যিটো তোমাৰ ৰেলিভেণ্ট হয়, সাপোজ তুমি গোলাঘাটত বিলং কৰা, এৰিয়াটো ডাটাখিনি এক্সেছ কৰিবা, ৰাইট? গোটেই অসমৰ ডাটাখিনি এক্সেছ কৰাতকৈ। तो आपको जहां आपके डाटा रेलिवेंट मतलब डाटा है उसी पर्टिकुलर ग्रुप में ही आप चार्ज करोगे, एनालिसिस करोगे। So that's the main motive of organizing this data in different data marts. Now, this is the, I hope that best example to understand this data mart, isn't it? I hope Uh, you have yes, got sir. it Yes, now. sir. Yes. Hello? Okay, good. So definition is clear. And one more diagram I have brought to you. You can see that this is the data mart infrastructure. You will see the different sources are there from the data warehouse. So I'm organizing the divisions like sales, financials, product, like that. So now come to the different topic, because we have already completed these three or means these three different types of data warehouse architecture. Can we move ahead? আমি আগলৈ যাব পাৰো, পাৰিব পাৰো? Yes, sir. Okay. So let's come to the next topic, that is properties of data warehouse architecture. Key property in data warehouse architecture, right? So what are those properties because of which we can call a data warehouse architecture as an what? Good one. ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टीज जो मेंटेन करने से हम एक, क्योंकि डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर तो आप कैसे भी बना सकते हो, तो उसमें कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ, दिस इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर, राइट? which will help our competitive to grow, competitive growth, right? So they are separation, scalability, extensibility, security, administrability. These are the properties. I'm repeating again: separation, scalability, extensibility, security, and administrability. Now, one by one, we'll go through each of them. Let's first come to this one, separation. So, prathame, separation means what? Analytical and transactional processing should be kept apart as much as possible. Now, here again, two technical terms are there. One is analytical, and मुझे अभी तक जितना भी डिस्कस किया, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है डाटा एनालिटिक्स हो गया, तो एनालिसिस क्या है,
ये तो समझ में आ गया होगा। Am I right, Shrika? Sorry. Yes, sir. Because this is very important now, because in our PhD we have to actually, for 50% work we need to deal with this, right? বুজি পাই আছা? পাইছো। তেনেহলে transaction की, what is transaction? So actually क्या हो रहा है, आपने अगर देखा होगा तो यहाँ से डेटा आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, है ना? तो जब ये डेटा आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? ऑब्वियसली some transactions are going on. Just take the example of your ATM card. To me, when you go to a ATM, then suppose you want to withdraw some money. Okay, key operation hobo? What operation will be conducted? কৰিম, withdraw কৰিম। Uh, তেতিয়া debit hobo. Okay, so debit hobo. Okay, debit हो जाएगा तो क्या होगा, आपके अकाउंट में से कुछ पैसा जितना आपने निकाला वो कट जाएगा। दिखने में बहुत आसान है, बट आप जो ये चीज मैनेज करोगे तो यू हैव टू इम्पॉर्ट सम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स, right? Forget about that because that's a part of DBMS. But in data warehouse, we don't want to deal, we don't need to deal with these things, but we want to deal with one thing that is transactions. Transaction means यहाँ data आ रहा है, बस कैसे आपको मैनेज करना है ये आपको करना नहीं है क्योंकि that's a part of DBMS. But जो data यहाँ push हो रहा है ETL process के जरिए, that things we term is our transaction. But ये प्रोसेस से आपके पास डेटा आ रहा है, और सेकेंड प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, यू ट्राई टू फाइंड आउट सम हिडन पैटर्न out of those data, and that is you this process analytically, right? So what the separation says that you should keep them as much apart as much possible. মানে you, when you see that this the third tier data warehouse architecture, তাহাত দুটা ইটো সিটোৰ পৰা बहुत আছে। ये दोनों चीज डेटा सोर्सेस से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये जो आर्ट जो भी है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अपार्ट है। तो इससे क्या होगा, इससे यही बेनिफिट होगा कि द वन हु आर एनालाइसिस दिस डाटा बिहाइंड आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज, राइट? कारण data mart means data warehouse, we actually keep the historical data. এনেকুৱা নহয় যে everyday transaction is going on, you are putting them again and again. No, no, no. For that thing, you are managing, suppose, a table, DBMS table. But here, you will extract them at once, suppose for the 6 months or for the 1 year. Then only you will put stamp into this data warehouse for the ETL process. So that's why this property says that this should be kept as much as apart possible. So that is the first property we are talking about, separation. I hope this property is now clear to you, right? So I have a doubt actually. So if transaction management data warehouse, it's a part of DBMS. Yeah. That thing I know, but then what exactly this data warehouse is doing in case of transaction? Okay. মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, what is going on actually? চোৱা, ইয়াত আমি ডেটা, মই একদম সহজ আপোনাক আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ। ইয়াত आमी डेटा सोर्सेस लिखीसु, यहाँ डेटा सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है ना, अलग बोल रहे हो ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करने की ऑफ कोर्स नहीं है। आप जैसे देखो, सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक? एक दुकान है, ठीक है, और আমি অসমীয়াত কওঁ গেলামালৰ দোকান সাপোজ, ঠিক है। তো what will happen that you know potatoes, আলু কি হৈছে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে, ওকে, ঠিক আছে। সেই বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা অহাৰ পাছত তুমি এজেগাত সেই বস্তুটো ষ্ট'ৰ কৰিছা, যিটোক তুমি কি বুলি কোৱা, গোদাম বুলি কোৱা, গোদাম বুলি কোৱা, ৰাইট? চ' একেটা কথাই হৈছে যে কি বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহি আছে, কিন্তু তুমি এইটো চোৱা নাই যে সেইখিনি এদিন আহিছে থৈছা না, you will store some period wise. মানে কি হৈছে, in DBMS you will actually collect those data everyday basis or the transaction basis. So when transaction basis you are collecting those data, you are storing those data, here only you need to apply transaction management techniques.
those techniques we have found or we have discussed in our DBMS. But after all, suppose after 6 months, 1 year, more barepoti time or kotha koi aso because this is truly related to the time period. Okay, tar পৰা আনি পেলাই ডাইৰেক্ট জাষ্ট তুমি ইয়াত থৈছা ইয়াততো তুমি কোনো ট্ৰানজেকশ্যন কৰা তাতহে তাৰ সাপোজ তুমি ক্ৰেডিট ডেবিট কৰিলা हाँ एटीएम से डेबिट और क्रेडिट जो भी कर रहे हैं आप लोग ठीक है तो वो तो आपका एवरीडे प्रोसीडियर में आ गया एवरीडे में बहुत सारे हो रहे हैं ये चीज हम डाटा वेयर हाउस के लिए नहीं कर रहे हैं बट ये चीज अपने अब वो जो एक्सेल का डेटा है ना वो लाके हम यहाँ पे रखेंगे बट फिर से जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो एज यूजुअल होता रहेगा फिर से वो नेक्स्ट 2 इयर्स का हम इकट्ठा लाके यहाँ रखेंगे হৈ গ'ল তোমাৰ ডাটাখিনি সেইখিনি ৰাখিলা নেক্সট ইয়েৰ হৈ গ'ল 2 বছৰ হৈ গ'ল ৰাখিলা কিন্তু প্ৰতিদিন বেচিছত নাও সেইখিনি ডাটা যিটো হিষ্টৰিকেলি আৰু যিখিনি মানে তুমি এনেকে টাইম ৱাইজ ৰাখি গৈছা সেইখিনি এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে we are actually dealing with this data now I hope that this is clear Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So can I come to the second property now? Yes, sir. So the second one is the scalability. And this term is very, what I can say that we all CS IT geeks are well known to these terms because this is the term where we actually. So hardware and software architecture should be able to upgrade the data volume, which has to be managed and processed, and the number of user requirements, which have to be met progressively increase. Also, whenever our requirement is increasing, okay, day by day basis. Similarly, the volume of this data warehouse should be upgraded so that it can accumulate those data. Okay, so जेतिया तुम्हारा रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए जब आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं उस चीज को आपका जो सिस्टम है जो भी चीज के साथ आप डील कर रहे हो ठीक है इतना तो कैपेबल रहता है कि खुद को अपग्रेड करके आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो खुद को वो सारे डेटा को एक्यूमुलेट कर ले तब हम उस टर्म टेक्निकल टर्म जो यूज करते हैं दैट इज स्केलेबिलिटी ओके so this should be there Yes, for sir. a good data warehouse right then extensibility the architecture should be able to perform the operations and technologies without redesigning the whole system this term scalability and extensibility somehow relate to each other okay extensibility means we don't need to again redesign the system it should be able to perform new operation and technologies or deal with some new technologies whenever needed then security you all know of course security is needed monitoring accesses are necessary because of the strategic data stored in the data warehouse. And administrability, data warehouse management should not be complicated. It should be easy. So these are the different characteristics of this data warehouse. Out of them, as per the technical terminologies are concerned, so I have illustrated the separation, scalability, and extensibility in details because these two you already know. So, whatever discussed today, every point is clear to you, right, Jika? Yes, sir. So, today's question is that you will answer by 11:20 is that what are the differences? What are the different properties? Sorry, that exist for a good data warehouse or architecture. Good data warehouse के लिए क्या-क्या properties हैं? ये आप mention करूँगा, ठीक है? Is that clear? Okay, sir. Okay, sir. That's good. And wait a minute. আমাৰ ক্লাছৰ গোটেই ডেট কেইটা just